So beyond what I've said in the parliament, there's nothing more to add for me on that. But I've indicated clearly that it will happen. Now, assessment for the rest of the year about the number being big or small as per your view, I'll have Tuhin get into the details, but we have shown the intent of the government in that Air India got cleared, NINL has found its buyer. There's a little bit more work to be done there, but you're saying that we are progressing in many of these. So I think we've been very realistic in telling what we'll do and achieving what we've told. Tuhin, you want to add anything more onto this? I'll just want to add that disinvestment actually is an accounting terms when actually receipts to the government. Now, when we, for example, do NINL, nothing comes to the government in accounting terms. But that doesn't mean that we are actually progressing to privatization in a faster way. So the emphasis is on completion of transactions and implementation. And if we keep too high a target, sometimes it also distorts the market, because nothing stops us from achieving when we want to achieve in disinvestment as per the plan. So ma'am has also mentioned that the ongoing transactions will be carried on and they will be completed. And these transactions, as and when they mature, they come to that. And secondly, on the revised estimates being 78, we should not also conjecture what will be the size of LIC IPO based on that, because valuation is yet to reach the final conclusion based on which we will do that. And there have been instances of actual receipts being different from even the RE figure, so you should not read too much into it. Okay, 122. Hi ma'am, Meghna Mittal from Newsrise. The budget has remained completely silent on India's listing on the foreign indices. There was an expectation that a tax amendment might happen to enable that. Has that been put on hold, or what is the plan on that? Just repeat your question. I think your voice was a bit muffled. Ma'am, I'm Meghna Mittal from Newsrise. My question is that the budget has remained silent on India's listing on the foreign indices. The expectation was of a tax amendment to enable that. So has that plan been put on hold, or what is the update on that? You're referring to the bond indices, yes, right? Yes. The issue is that the NR to NR transactions are anyway tax-free. So there's no capital gains. The issue was between NR and resident. So the BEPS discussions are on for us. And in those discussions, we are actually saying that the capital gains right should come to the country where the transactions emanate from. So that has been our stand, and those discussions are still on, and we are the one who's propounding that thing, and that's how we're doing those discussions. So this was not the right time for us to take a decision in a manner where we give up on our own domestic thing while we keep fighting in the BEPS discussions. So that was the basic reason that we didn't want to do it this year. Number 90. Ma'am, first congratulations. Just two quick clarifications. One is on cryptocurrency, because you did touch about the RBI now giving digital rupee, and it will start from next year. And you've reflected that in the finance bill. You've also cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? I'm a little bit keen to understand that. And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one key issue which affects all of us, including you, inflation. How are you deal with that? First thing, Sunil, I said the bank will be issuing a digital currency. Currency becomes a currency is a currency only when it is issued by the central bank
even if it's a crypto. But anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency, they're not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals. And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that distinction. Any transaction that is happening currency outside is only with the distinctions are very clear. That'll get issued sometime this year. Only with the transaction happening that'll get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. We have circulated a paper. Inputs are coming in. Public stakeholders are also talking about it. So regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits, can I? Well, every budget doesn't speak explicitly about inflation and its impact, but of course, if you're talking of numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. Okay. मैम, मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। बहुत सारी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया मैंने। लेकिन ऐसा मैम ऐसा क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली? आम जनता जो पब्लिक खास तौर पे सैलरीड क्लास है उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार बजट से। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली माने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। 124. Hello. Good evening, ma'am. Shishir. Yes, Shishir. Ma'am, there is one particular announcement you made about the blended and non-blended petrol and diesel, that additional or the differential 2 rupees thing. Does this mean all the petrol and diesel sold by petrol pump except those who are not blended from October 1, 2022 will be costlier? We certainly want to encourage blended fuel. That's a simple message in that. Anything else you add, Tarun? We have discussed with the Ministry of Petroleum. We have also collected data on what is not being blended, and this is something to push the petroleum companies to ensure that they do the blending. So our desire is not to collect this tax because it will be very minimal, but the desire is that the blending happens, and to that extent it benefits the country. 106. मंत्री जी, हमारा आपसे इन दिनों से मेरा सवाल है कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि 80 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा और रोजगार बढ़ाया जाएगा। ये किस तरीके से? ये किस तरीके से? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का हम उठा रहे हैं,
वो 34% या उससे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। सो पीएलआई के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा, इसलिए पीएलआई देना है। वो सेकेंड बात है। तीसरी, अभी 6,000 crores have been added ये जो अभी सॉवरेन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, और ईसीजी एलएस जो दिए पिछले साल एमएसएमईज के लिए, उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी, सरकार का नहीं, इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आ रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे, वो उन जॉब से हटाया नहीं गया। सो सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान पैंडेमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, और उसके बाद ये ईसीजीएलएस, अभी जो ईसीजीएलएस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, वो सब जॉब को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं। ये तरीका। 175। मैम, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम, आपने बजट में 2 अनाउंसमेंट्स करी हैं, एक आईपीसी अमेंडमेंट्स को लेकर। मैम, किस तरीके के अमेंडमेंट्स आप देख रही हैं आईपीसी के अंदर जिससे रेजोल्यूशन प्रोसेस जल्दी हो पाए? और दूसरा मैम, आपने कहा एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए। मैम, किस तरह की कंसर्न उन्होंने आपके सामने रेज किए हैं? क्योंकि आपने लिखा है कि आर्बिट्राज या फ्रिक्शन जो है उसको दूर किया जाए, तो क्या कंसर्न्स प्राइवेट इक्विटी प्लेयर और वेंचर कैपिटलिस्ट के? No, there could be any number of concerns. Once when they met me, and once when they met the Honorable Prime Minister, they went into a lot of details which are important from the point of view of ease of doing business and also better understanding that sector. If all of us can see the point that private equity in India venture capital funds have been one of the prime reasons why many of the startups could rise to become unicorns within first 6 months of this year itself. Last year, 21 itself, you saw how many of them benefited by funds being made available in India through private equity. Now, if that sector needs further facilitation, obviously, the sector will have to sit and talk with a group of people who understand their needs and then suggest solution for policy making. That is why I have referred to the consultation which we've had with them and then said that we will appoint a committee which will go through it and come back to the government with suggestions. 255. Ma'am, Gyaneshwar Dayal from Gen Express. I have a question, actually 2 questions. When can we expect the farmers' income to double? Number 1. And When can we expect the pharmaceutical? Farmers' income to double. It was supposed to double in 2022. And how far is the goal of 5 billion economy? And in what way your budget would take us there? Thank you. Who wants to? I mean, will Ananta Nageshwaran want to answer it?
So if you look at the amount of minimum support prices that was given out this year, and also the record procurement, so we are well on our way to helping the farmers. Is your mic all right? Or do you want to, the voice is not coming out. So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. Those statistics are given in Madam's speech document as well. As far as the $5 trillion economy size is concerned, if you look at the fact that in the year ending 21-22, as well as in the next financial year, we are the fastest growing economy among large economies, and our GDP in dollar terms has already crossed $3. So depending on how the exchange rate moves, and there is enough hope to believe that the Indian rupee will in fact remain stable to strong, given what is going on in the developed world. And if we continue to retain the path of 8% real GDP growth, it will translate into even 8% dollar GDP growth. So therefore, if we extrapolate it in the financial year 25-26 or by 26-27, even in by 25-26 itself, we should be at the $5 trillion size in terms of nominal GDP. Thank you. मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ. Sorry, I didn't get your name. ज्ञानेश्वर जी, एक आध विषय में जोड़ना चाहती हूँ उसमें. I'll just list out the things, you will understand where I'm coming from. MLE, urea, micronutrients, मैं एक सिर्फ यूरिया सब्सिडी का नंबर बोलती हूँ. बजट 21-22, मतलब 1 February 21 में जो बजट दिया गया, उसमें 58,768 was the allocation for urea subsidy. This time it is 63,222 आने वाले साल के लिए, ठीक है? और actually 58,768 जो BE में बोला गया यूरिया सब्सिडी, वो RE में 75,930. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल यूरिया प्राइसेस जितने भी इंक्रीज नहीं हुए, इट्स ऑल राइट, इट गॉट इंक्रीज्ड, मगर वो बोझ किसान के ऊपर पड़ने नहीं दिया. प्रधानमंत्री जी ने उसको तुरंत इंटरवीन करके that burden we took, we didn't put it on the farmer. So MSP, urea, nutrient, in terms of micronutrients which we are giving for farmers, 6,000 rupees Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Additional income कमाने के लिए किसान के लिए शहद का कल्टिवेशन, हनी, बी कीपिंग का प्रावधान, उसको समर्थन और उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट लिंकेजेस थ्रू ई कॉमर्स. फिर सोलर पंप्स, उनके वाटर पंपिंग के लिए किसान के लिए सोलर पैनल वगैरह दिया गया है, जिससे उनका ऊर्जा का एक्सपेंस कम होगा. फिर मैंने शायद जुलाई 19 के बजट में या 20 के बजट में ये बात बोली, अन्नदाता क्यों ऊर्जादाता नहीं बन पाएंगे? जरूर बन पाएंगे. We made sure that every kisan will produce bichli using solar panels in his field, and he can also uplink that and earn money from the supplying urja. Finally, in this budget, I have also made an announcement for food processing, which is at the farm gate, so that investments can happen there. Post-harvest grains को तुरंत processing में वो किसान देने के कारण उनका income better rates मिलता है उनको. So there are several steps that we are taking for improving farmers' income. I want you to please take cognizance of it. हाँ, इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट वो भी इम्पोर्टेंट है. वो भी इम्पोर्टेंट है. इस साल टारगेट 16.5 लाख करोड़ का था, जो अभी तक 75% हो गया है.
अगर आप देखेंगे आज से 16-17 में वो 10,65,000 करोड़ था, तो ये बढ़कर अब 16,50,000 करोड़ इस साल होगा। हमारा लक्ष्य है इसको 18 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी काफी बढ़ोतरी हुई। Okay, 125. Ma'am, Timsi Jaipuria this side from CNBC TV 18. Your tax revenue collection targets are conservative, but your borrowing numbers are all-time high. How do you explain that? And secondly, when it comes to public sector expenditure, the capex expenditure for RE 2022, they have been revised downwards. How do you explain growth along with these downward revisions? First, on the, you're saying that the capital expenditure targets for the RE have been moved downwards. From how much to how much, according to you? Okay. No, not in the public. The capital expenditure budget estimate was 5,54,000 crores. The revised estimate, after removing some, the actual revised estimate is 6,03,000 crores. But even if you exclude 52,000 crores, which is an Air India sundry dues repayment, it is 551. So the RE is 551 against a budget estimate of 554. That is statistically insignificant. So basically, the capital expenditure targets are expected to be achieved. I think this question was also asked by your colleague Sapna here, that the revenues are conservative. So if we look at revenues and compare it with the GDP figures, I would also like you to concentrate on the fact that the excise duty is not linked to that. Excise duty is a specific duty, so that doesn't go up as the prices would go up. One, and secondly, if you recall, we have reduced the excise duty on diesel and petrol by 10 rupees and 5 rupees per litre. So if we take away the excise duty number both from the RE of the current year and the B of it, then the growth in the revenues is more than 14%, which I think is not conservative, but is a very pragmatic number, and we would make all attempts to achieve that. Number 70, number 70, number 70. No, the borrowing number is nothing but the fiscal deficit minus the expected small savings collections and the other sources. So they tally. I mean, it is 16,61 is the total fiscal deficit. 11,80 or something is the net borrowing requirement. The difference is small savings and certain others under receipts. I don't see any, there is no artificial, that's a very realistic number. It's based on our best estimate of what will be collected in small savings, and net of that is the borrowing requirement. Ujjwal Narayan from Newsrise. Ma'am, in last year budget, you have announced about sale of privatization of 2 state banks. But this year, there is nothing that sort has been confirmed in the budget. Just wanted to know what is the situation. Does government is going with the stated policy which it stated in last year budget, and that for the privatization of 2 state-run banks, and what is the holistic policy on the privatization of bank insurance company as a whole? You've answered the question yourself. What is a holistic policy? Holistic policy is a continuation of last year's budget. I've said that. This budget in every aspect is a continuation of last budget, inclusive of the privatization matter that you're talking about. That's what I'm telling you. We are continuing that agenda. All right? Number 68. Sorry? Yeah, I said Air India also, and I've done the Air India, haven't I? Huh? That's right. When we have something, you'll get to know, no? I'm not doubting it. Huh? That's right. Thanks for reminding me. Number 68. Hold on. Hold on.
क्या चीज? डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में? घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। नहीं मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिजिटल एसेट क्या है बेसिकली। ठीक है, वही है वो प्रश्न, और डिजिटल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सब उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद है, उस समय बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? 1 to 1. जनता के सवाल है। एक तो लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, आपने जवाब दिया गोलमोल, लोगों को समझ में नहीं आया। सॉरी, जो महंगाई पे सवाल पूछा गया था, शायद प्रभु जी ने पूछा था, हाँ जी, कि देश में इतनी महंगाई है, उसका आपने बहुत ही डिफिकल्ट आंसर दिया, शायद आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। मेरे पास किसी का प्रश्न आया कि समझ में नहीं आया मैडम ने महंगाई पे क्या बोला। दूसरा मेरा प्रश्न मैडम बेरोजगारी के ऊपर है। आपने कहा लाखों रोजगार सृजित होंगे, सरकार का वादा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ और घट गए बजाय रोजगार देने के, और बेरोजगारी ज्यादा हो गई। और एक छोटा सा मैडम आपका एक इशू था, शुरू से चला आ रहा है पार्टी का, कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे। कोई ऐसा डेटा है कितना ब्लैक मनी वापस आया आज तक? इन्फ्लेशन के बारे में जो मैंने जवाब दिया, वो जवाब मैं दोहराऊंगी, मगर वो अगर आपको गोलमोल लग रही है, मैं किसी और से जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका शायद आपको हिंदी में और इंग्लिश में दिक्कत है। I'll ask somebody else to answer it. There is no गोलमोल सर। बजट जब प्लान करते हैं और एसेंशियल सर्विसेज का कमिटी का, ये बार बार हम बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ, जब इंक्रीज होता है प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज का, मैं मानती हूँ आम आदमी के ऊपर उसका दिक्कत जरूर पड़ेगा, उसको मैं नकार नहीं रही हूं। मगर ऑयल सीड्स, ऑयल, एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम जब हुआ, तुरंत हमने ड्यूटी कम करते हुए पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एक बार नहीं 2 बार कोशिश की, और पाम ऑयल का इंपोर्ट, क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट और रिफाइंड भी ज्यादा आ रही है, जिसका असर आजकल एडिबल ऑयल में जरूर पड़ रही है और मार्केट में खबर भी है। इन्फ्लेशन दूसरा एक और विषय, एडिबल पेरिशेबल कमोडिटीज के ऊपर जब होता है, उसको भी इंपोर्ट के द्वारा तुरंत हेल्प करने के लिए हम स्टेप्स उठाते हैं। फिर ऑयल सीड्स भारत देश में भी कल्टीवेट हो, उसका उत्पादन ज्यादा होने के कारण हम आत्मनिर्भर हो एडिबल ऑयल में, उसका भी इस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे कदम हम उठा रहे हैं। एक और विषय, सिंपल टेक्निकल बात मैं जिक्र करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर जनता के ऊपर प्राइसेस के वजह से जब ट्रबल होता है, उसमें एक्शन लेने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, और हम बार बार उसके ऊपर कदम उठाते आ रहे हैं। मगर टेक्निकली 6% से ज्यादा कभी ब्रीच ही नहीं, छोटा इधर उधर एक महीना हुआ होगा 6% ब्रीच करने का इन्फ्लेशन का विषय में। मैं याद दिलाना चाहती हूं, इस सरकार 2014 से लेकर आज तक we have not allowed it to go to double digits। जो याद होगा आपको, उससे पहले 2014 से पहले it was always in the range of 10, 11, 12, 13, even food products। इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर इस सरकार की ध्यान कभी भी ज्यादा है, और एक्शंस भी तुरंत हम लेते हैं। अगर ये भी आपको गोलमोल लगता है, मैं किसी और से भी जवाब देने के लिए बोलूंगी। ठीक है, बोलिए, चूज करिए किसी के।
एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। बहुत सारे, मैं भाई साहब, पैंडेमिक की वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहाँ भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, मगर एकदम कुछ नहीं किया वो सही भी नहीं है। कल का इकोनॉमिक सर्वे में अनंत नागेश्वरन जी और हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, आई थिंक ही इज हियर, संजीव सन्याल, इतना विस्तृत रूप में जॉब्स के लिए क्या क्या पिछले साल में हुआ वो डिटेल दिए हैं। मैं संजीव से बोलूंगी आपको जरा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हाँ, सो इट विल हेल्प यू टू नो। थैंक यू। Number 260. Somanathan wants to. Yes. Just specifically on job. Yeah, but specifically on jobs and specifically what is in the budget. So one is there is an additional 2 lakh crores of lending to MSMEs which is outside the ECLGS. So ECLGS is for those affected. It's an automatic program for existing borrowers. This is for new lending to MSMEs unconnected with ECLGS. 2 lakh crore of additional provision is made in this budget. ECLGS has, as already mentioned, been expanded for the hospitality and related sectors. The outlay on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is up by 27%. And in addition to that, a provision is being made that in the capital expenditure support to state governments, if state governments have certain priority projects in PM Gram Sadak Yojana have been identified, we will even take the 40% state share on those components so that the states have no burden in carrying out these works. These are extremely labor-intensive projects, and in addition, of course, there is a huge increase in capital expenditure. It has a very high employment effect. We have a new scheme for the Northeast, which is abbreviated as PM Divine, which is the PM's development initiative for the Northeast. This is a gap-filling scheme where if something doesn't fit in any existing scheme, Northeastern states can post those projects to this fund, and this fund will give 100% funding for those projects. In addition, we have the production-linked incentive schemes where we expect 60 lakh jobs to be created. Most of them are getting rolled up now one by one. So there are a number of initiatives in this budget, quite apart from what has been done earlier. हम बार बार देते आ रहे हैं। Actually, sharing of information विदेश से, स्विट्जरलैंड से 2018 के बाद में से शेयरिंग हो रही है। विदेश में जो अकाउंट्स है उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है उनको वापस ले आने के लिए। सो वो शेयरिंग के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर वी आर वर्किंग एवरी अकाउंट बाय अकाउंट फॉर ब्लैक मनी टू बी ब्रॉट। एंड अनदर थिंग, टुडे द NPAs in the banks are coming down. Banks are getting the money back of those who have fled the country. Having taken the money of the banks and having gone out, वो पैसा जब वापस आ रही है वो भी in a way partly black money ही होता है जी, जिसका टैक्स नहीं भरा, बैंक को पैसा चीट करके चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे के पूरे वो ब्लैक है, उसमें भी ब्लैक मनी है। 260. मैम आनंद हूँ इंडिया टीवी से। हाँ मैम, आपके लिए उधर से बहुत वैसे सवाल आ रहे थे। अपोजिशन ने ये कहा है कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट का है। उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, MSME के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं? मैं भी दूंगी। अरे आनंद प्रश्न पूछे और मैं जवाब नहीं देती, ऐसे थोड़ी ना होती। I will give answer.
जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारी चीज़ों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज़ का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये, निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, no? No, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what is being said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे हैं। स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद, बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना, I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए। क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है, उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी। इसलिए हर विषय बोलने से पहले वो महाराष्ट्र और पंजाब में कर दिखाएं, फिर बात करें। छत्तीसगढ़ में कर दिखाएं, फिर बात करें। Almost irresponsible comments are coming as criticism. I'll take criticism, but not from somebody who has not done his homework. Thank you. 266. मैम अखिलेश शर्मा एनडीटीवी से। इनकम टैक्स रेजिम को लेकर के सवाल था। आपने बजट में घोषणा की थी न्यू टैक्स रेजिम की, और जो आंकड़े अभी तक आए हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने उस नए रेजिम के लिए नहीं दिखाया। दूसरा प्रश्न ये जो आपने खुद जिक्र किया कि पिछले 2 साल में पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई है, कई जगह पर रोजगार की कमी हुई, भारत में भी उसका असर पड़ा है, तो मिडिल क्लास है वो एक राहत की उम्मीद कर रही थी, कुछ राहत मिले इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर। हालांकि आपने कहा कि देखिए पिछले 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो क्या इसी को राहत माना जाए कि टैक्स नहीं बढ़ा है? नहीं, मैं सिनिकली जवाब नहीं दूंगी उसको। सिनिकली अगर देना है तो मैं बोलूंगी हाँ टैक्स बढ़ा नहीं है इसलिए राहत है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन गिव, there are times when it will have to wait a bit longer. So I'm sorry it didn't happen. But बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड। मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूँ। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है, उन सब को राहत दिलाया नहीं है। हम मिडिल क्लास मतलब क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल होम्स जो देते हैं मिडिल क्लास को देते हैं। सीनियर सिटीजन्स में मिडिल क्लास नहीं है। आज स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है इसीलिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है। सो मिडिल क्लास के वर्णन हम मन में रखें प्रश्न पूछने से पहले। Number 9. हाँ, yes, we have been actually. Tarun can say something more. There are 2 regimes, one in the corporate sector and one for the one that came last year.
So on the corporate also, when the tax rate was reduced from 30 to 22%, a choice was given to the corporates to move to the 22% regime while taking no exemptions. So we have figures for 1920 financial year, which is the assessment year of 2021. 65% of the income has actually shifted to the lower tax regime. So basically, a large number of people are shifting, people who are finding that they don't need exemptions or their exemptions are over, they are moving into that. Let me also mention to you that we have analyzed data for corporates. The average tax rate being given by corporates is about 22 odd percentage in that year. The FM has mastered the jargon of capitalist economics. Read her speech again. Words digital, portal, IT-based, paperless, database, ecosystem, global, Atmanirbhar. The word poor, and we thank the FM for remembering that there are poor people in this country. There are worrying macroeconomic indicators. Top of the list is that the fiscal deficit for 2021-22 has overshot the target of 6.8% and is estimated at 6.9%. For the next year, it will be 6.4%. That is insufficient correction if the goal is to reach 4% 3 years hence by 2025-26. The financing of the fiscal deficit is also a matter of concern. 70% of the FD in 2022-23 will be financed by market borrowing, as against 55% in the current year, crowding out private sector borrowing. The worry from the welfare angle is greater. Every key subsidy has been slashed. I repeat it, every key subsidy has been slashed. I'm reading the figures for the current year, 21-22, and the next year, 22-23. Petroleum from 6,517 crore to 5,813 crore. Fertilizer from 1,40,000 crore to 1,05,000 crore. Food, 2,86,219 crore rupees to 2,06,481 crore rupees. The outlay for agriculture and allied activities from 4.3% of GDP to 3.84% of GDP. Crops from 15,989 crore to 15,500 crore. Maganrega from 98,000 crore to 73,000 crore. The total subsidy bill has been cut by a humongous 27%. This is the most unkindest cut in this budget. The finance minister may have forgotten the poor, but the poor have long memories. The next worry is about raising more resources. The FM is betting on heavy market borrowing, an increase in corporate tax by 85,000 crore, personal income tax by another 85,000 crore, and GST by 1,05,000 crore. There is not a word about raising more resources from the rich, especially the very, very rich 142 persons whose wealth in the last 2 years has increased from 23 lakh crore to 53 lakh crore. You will ask me, no doubt, if there is not any aspect of the budget মহাশয়কে কিন্তু তাকে পাওয়া যায় আমরা ছাড়া সিপিএম আমরা জানাবার চেষ্টা করেছিলাম সুরেন্দ্র পাঠককে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম বিমান বসু মহাশয়কে কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি এছাড়া আমরা আরএসপির মনোজ ভট্টাচার্যকে বলেছিলাম আমরা শহীদ সৈরানীকে ফরওয়ার্ড ব্লকের হাফিজ সৈরানীকে বলে কিন্তু তার ফোন কিছুতেই তা পাওয়া যায়নি দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে বলেছিলাম এমএলএ তিনি এই মুহূর্তে আলমপুর যেহেতু বিহারে আছেন
তাই তিনি আসতে পারবেন না, তিনি জেনেছেন। আমরা এসইউসিকে বলেছিলাম, চণ্ডী ভট্টাচার্যকে, তিনি সেদিনকে অন্য কাজে ব্যস্ত, আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও উনি বলেছেন আমরা থাকতে পারছি না। কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য, কিন্তু প্রদীপ ভট্টাচার্যকে উনি বলেছেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেছেন আমি সংসদে আছি, যদি না থাকতাম তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের আমন্ত্রণে স্বাগত। আমার যে তালিকা, রিটার্নিং অফিসার তো আর মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। রিটার্নিং অফিসার মানে সাংগঠনিক নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার, সেই নিয়ম মেনেই যে তালিকা পাবো সেই তালিকা অনুযায়ী তাদেরকে বলবো। কালকে শুধু চেয়ারপারসন সেটা আমি কি করে বলবো? নির্বাচনের নির্ঘণ্টের সময় দেখবো যে কারা নমিনেশন দিচ্ছেন, কারা দিচ্ছেন না, সেই মতন ব্যবস্থা নেব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীন সবাই প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে তিনি টার্গেট করেছেন প্রতি বছর 1 কোটি করে বেকারের চাকরি হবে, আজকে বলছেন 5 বছরে 60 লক্ষ টাকা, হঠাৎ করে এত নেমে গেল। না না, চাকরির তো কোনো কর্মসংস্থান তো হয়ই নি, উল্টে প্রায় 3 কোটির কাছাকাছি লোক কর্মচ্যুত হয়েছে। এবং তাতে কথা হচ্ছে যারা সেই সমস্ত শিল্পগুলো, যে সমস্ত শিল্পগুলোর লেবার ইন্টেন্সিভ কিংবা ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ, যেটাই বলুন না, তা আগে সৃষ্ট হয়নি। তিনি 15 লক্ষ টাকা করে ফেরত বলেছেন, দিয়েছেন। ওনার নাম হচ্ছে প্রতিশ্রুতি মোদী। এই মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি তারা যা বলেন তারা কাজে করেন না। তারা 1 কোটি থেকে নেমে এসে এখন 5 বছরে 60 লক্ষ হলো। আর কত লক্ষ লোকের যে চাকরি ইতিমধ্যেই চলে গেল, আমি বারবার বলছি 3 কোটি টাকা। বেকারিত্বের হার আজকে